Hello, welcome to the platform of Chronicle IS. I am Prakash. Now I am going to deal with the environmental section and disaster management. So look at the next question. Explain the role of biodiversity in maintaining the ecological balance. Question क्या कह रहा है? Explain the role of biodiversity. So before we are going to start the explaining the question or dealing with the question, firstly, our first work is decoding the question. Decode करना है सबसे पहले question को. तो क्या कह रहा है? Explain is a tail word. Explain is a tail word. Explain the role of biodiversity in maintaining the ecological balance. In this question, you have to understand what is biodiversity, what is biodiversity itself, and second, explain what is the role of biodiversity in maintaining the ecological balance. So what is ecological balance? You have to understand what is the means of ecological balance, and you have to also understand what is biodiversity. So क्या कह रहा है? Explain the role of biodiversity in maintaining the ecological balance. So before we are going to approach this question, I want to tell you what is biodiversity and what is ecological balance. What is biodiversity? Biodiversity is a variety of life. Biodiversity is a variety of life. It is a variety of life. Variety of life का मतलब क्या होता है? It is a variety of life including plants, animals and microorganism. So biodiversity is a variety of life. Biodiversity includes variety of life, life of plants, animals and microorganism. Also you can say that the genetic diversity within the species, genetic diversity within the species, और क्या हो सकता है? Ecosystem and their interaction. Biodiversity is a variety of life including plants, animals and microorganisms, genetic diversity within the species and amongst the species. It means, let me show you with the diagram. Like suppose that it is a biodiversity. Bio, it means we are talking about living things. Diversity, it means how many varieties. So first is, like suppose that it is a plant. It is a plant diversity. In plant there are also genetic diversity. There is also the family classification. Like मान लो कोई banyan tree है, कोई देवदार का ट्री है, उसी के साथ बहुत सारा प्लांट भी है. ठीक, प्लांट में जैसे कौन सा है? जैसे प्लांट के साथ हम ले सकते हैं, ये मान लो कोई एक बिगर प्लांट्स हैं. ठीक, जैसे हम समझ सकते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही देयर आर लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट, देयर आर लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एज वेल. इसके साथ साथ एनिमल्स भी हैं. देयर आर सो मेनी वेराइटी ऑफ एनिमल्स. कोई रेप्टाइल है, ठीक, नॉन रेप्टाइल एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो टाइगर है. ठीक, कैट फैमिली के भी हैं. तो ये डाइवर्सिटी की बात हो रही है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी वैसा ही है.
जेनेटिक स्पीसीज। अब कह रहा है व्हाट इज इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है? सो नेक्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ecological balance. In this question, what is ecological balance? What is ecological balance? So ecological balance is a natural state of equilibrium which provides, or it is a natural balance, or it is a natural equilibrium which provides living organism and their environment in a balance state. तो क्या हो गया भाई? इकोलॉजिकल बैलेंस इज अ टाइप ऑफ नेचुरल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम where sustainability and potential is always in the state of balance. In the state of balance. तो क्या पता चला इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है भाई? Ecological balance is a natural state of equilibrium between living organism and their environment. It ensures that ecosystem can be function properly and sustainably. और यहाँ दूसरा भी तो मैं बता दिया है कि ecological balance is a type of natural state of equilibrium where sustainability and potential is always in the state of balance. It indicates how healthy biodiversity is, and it also indicates how environment is in a good condition. So that अब इसमें पूछ रहा है कि भाई बताओ रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। क्या है रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी? तो सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज biodiversity, and then we have to understand what is ecological balance. Balance is something where everything in a positive state, but how biodiversity is providing more ecological balance. We all know that more the diversity of species, more the chance of survival, of the species. जैसे मान लो फूड चेन को ले लेते हैं. सपोज दैट एग्जाम्पल में हियर वी आर टेकिंग फूड चेन एज वेल एज फूड वेब. फूड चेन और फूड वेब ले लिया. फूड वेब ले लेते हैं, चेन नहीं, फूड वेब. द मोर द number of animals in a diverse family, there is a more potential of sustainability of the environment, and there is a more balanced ecology when the diversity is more in a genetic diversity as well as the number of diversity from a different family. तो हम क्या कह सकते हैं, in context of food chain, more the diversity of species, more the chance of survival. food chain और food web के साथ. अब क्या कह रहा है, more the number of species, more better nutrient cycle is. तो सेकंड क्या हो सकता है कि जितना नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीसीज होंगी, जितना नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिलीज होंगी, उतना अच्छा न्यूट्रिएंट साइकिल चलेगा. जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्लांट, प्लांट टू एनिमल्स एंड रीसाइकल, एंड अगेन वही साइकिल चलती रहेगी. ठीक, तो न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया. थर्ड क्या कर सकते हैं हम लोग, पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल अच्छा हो सकता है.
मोर दी, एक ही थीम लेके चल रहे हैं, मोर द नंबर ऑफ, ये वाला थीम हमने ले लिया, मोर द नंबर ऑफ और द मोर द डाइवर्सिटी मोर द चांस ऑफ सर्वाइवल। उसी अंडर दिस थीम हम लोग नेक्स्ट बता रहे हैं कि पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल अच्छा हो सकता है। जैसे इसका मतलब क्या है, मेनी इंसेक्ट्स लाइक बीज, बी जो होती है मक्खियां, बर्ड्स एंड बैड पॉलिनेशन प्लांट्स, enabling food production and maintaining the food security and maintaining the food diversity, ये भी हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या हो सकता है, क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन, क्या मतलब होता है क्लाइमेट रेगुलेशन का? इसका मतलब है कि डाइवर्स फॉरेस्ट जो है, या हम इस तरीके से कह लेंगे डाइवर्स फॉरेस्ट एंड ओशन स्टोर कार्बन, ठीक, डाइवर्स फॉरेस्ट एंड ओशन स्टोर कार्बन एंड हेल्पिंग टू रिड्यूस एंड रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट। तो मोर द नंबर ऑफ डाइवर्सिटी इन द ओशन, more the chance of climate adjustment by the earth and it can help in the ecological balance। next क्या हो सकता है भाई, डिजीज कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल हो सकता है, डिजीज कंट्रोल हो सकता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डिजीज कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है, जैसे इफ द डाइवर्ज रेंज ऑफ स्पीसीज कीप पेस्ट एंड डिजीजेज इन चेक, मतलब क्या होता है, चेक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मोर द इकोलॉजिकल बैलेंस, सपोज दैट इफ सम स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट it can be replaced, not extinct, it can be replaced by other ones, other ones, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, ecosystem resilience, the more the number of biodiversity, more the number of biodiversity, more the potential of functionality, potential of sustainability, potential of survivability is enhancing। इसका मतलब क्या पता चला हमें, ecosystem resilience, the number, the chance of ecosystem resilience, the chance of ecosystem resilience, the chance of survival of environment, the chance of potential or the survivability is enhancing। The more the number of diversity, it can enhance overall sustainability and potential and the life expectancy or the lifespan of the ecological environment। Okay, conclusion क्या कर सकते हैं, तो biodiversity is essential for, conclusion में क्या लिख सकते हैं कि biodiversity is essential for maintaining ecological balance। तो क्या पता चला, बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस without ecological without biodiversity, without conserving biodiversity, it cannot be possible to maintain ecological balance। क्या बता सकते हैं कि भाई विदाउट बायोडाइवर्सिटी it cannot be possible to maintain the ecological balance, and biodiversity is necessary for the healthy ecosystem,
इट इज नेसेसरी और इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द होल इकोसिस्टम, होल बायोस्फीयर। तो ये कंक्लूड करके आप ये कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। थैंक यू।